Hello everyone, today we'll start a new story. Cut. Hello everyone, today we'll start the new chapter, Invisible Man. Let's begin. Chapter 11, The Invisible Man, theme stream. The story is about an invisible man who faces many challenges as he tries to move around unnoticed. एक इनविजिबल मैन की स्टोरी है जो अपनी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करता है जब वो ट्राई करता है टू मूव अराउंड unnoticed. Although he initially feels excited about his invisibility, तो अब कोई उसको देख नहीं सकता है तो उसका फायदा भी वो उठाता है, उससे एक्साइटेड भी लगता है, लेकिन कई बार चीजें गलत हो जाती हैं. He gets into trouble with people on the street, encounters dogs that can sense him, and eventually dogs जो होते हैं they can sense the people who are invisible. He eventually loses all his belongings when his lodging catches fire. Story shows how being invisible turns out to be much harder than the man had expected. इतना मुश्किल हो जाता है invisible होना. Characters in Spotlight: The Invisible Man, the main character who has made himself invisible. At first, he feels powerful, but soon he faces challenges like stumbling, causing trouble, and struggling to stay unnoticed by others. The cabman is a man who accidentally hits the invisible man while trying to grab a basket. The man with the soda water basket. This man is surprised when his basket of soda water siphons is mysterious twisted out of his hand by the invisible man, adding to the confusion of his dog is a small white dog that can detect the invisible man through its strong sense of smell. It barks and leaps at the invisible man, making it hard for him to hit it. The two urchins are the two young boys who notice muddy footprints on the stairs. They are puzzled and excited by the mysterious footprints and start investigation where the invisible man might have gone. The tall woman, a woman who unknowingly hails the cab that the invisible man is. She almost causes him to be discovered, but he escapes just in time. The blind man, a man whom the invisible man fears because of his strong intuition. Invisible man tries to avoid him while escaping through the. Now the quest begins. If you were given the power to become invisible, how would you use it? This story is about a scientist who discovers a way to become invisible. अगर आपको पावर मिलती है, if you are getting the power कि आप invisible हो जाओ, तो how will you enjoy it? How will you feel about it? तो ये स्टोरी एक साइंटिस्ट के ऊपर है उसको एक तरीका मिला इनविजिबल होने का. इनिशियली एक्साइटेड अबाउट अ लाइफ फ्री ऑफ रूल्स, लगा कि इनविजिबल होने से कोई रूल रेगुलेशन नहीं होंगे, लेकिन क्विकली वो रियलाइज किया उसने डिफिकल्टीज जो फेस उसने करी बीइंग इनविजिबल. दिस मैच डिस्क्राइब हिज फर्स्ट एक्सपीरियंस था ऑफ वेंचरिंग इनटू द क्राउडेड स्ट्रीट्स ऑफ लंदन. तो वो जा रहा था लंदन में इन द क्राउडेड स्ट्रीट भीड़ में बीइंग एन इनविजिबल मैन. तो उसने क्या क्या चीजों को फेस किया, दैट्स द extract which will he has shared. In going downstairs the first time, I found it unexpected difficulty because I could not see my feet क्योंकि उसको अपने feet नहीं दिखाई. I stumbled twice and there was an unaccustomed clumsiness in gripping the hold. But लेकिन by not looking down, however, I managed किया to walk on the level passably well. My mood, I say, was one of the exaltation. I felt as a seeing man might do with padded feet in a city of blind. अब उसको बहुत ज़्यादा जॉय, प्राइड फील हो रहा था, जो इंसान विजिबल होने के बाद भी नहीं कर सकता. लाइक विजिबिलिटी में क्या था, पैडेड फीट, नॉइजलेस क्लोथ्स, मतलब एंड इन अ सिटी ऑफ ब्लाइंड ऐसा लग रहा था. So I experienced a wild impulse to jest, to startle people, to clap men on the back, flying people's hats astray, and generally revel in my extraordinary advantage. अब उसके बाद बहुत सारी एडवांटेज थी. वो किसी के हैट पहना हो तो उसके हैट को उतार सकता था कि कोई उसको देखेगा नहीं. वो किसी को मार सकता था, किसी को पुश कर सकता था. ही कैन डू ऑल द थिंग्स व्हिच अ नॉर्मल पर्सन कांट डू. बीइंग इनविजिबल ही कैन डू ऑल दैट थिंग. बट हार्डली हैड आई इमर्ज्ड अपॉन ग्रेट पोर्टलैंड स्ट्रीट जब वो उन्हें क्लैशिंग नॉइज सुनाई दी एंड वाज हिट वायलेंटली बिहाइंड एंड टर्निंग सॉ मैन कैरिंग अ बास्केट ऑफ सोडा वाटर. उसने देखा, जब उसको टकराया तो उसने देखा एक मैन है जिसने सोडा वाटर साइफन्स को की बास्केट है, लुकिंग इन अमेजमेंट. बहुत ही अमेजिंग लुक दे रहा था वो. ऑल्दो द ब्लो हैड रियली हर्ट मी, उससे हल्का सा उसको हर्ट तो हुआ. आई फाउंड समथिंग सो इरिस्टिबल इन हिज astonishment that I laughed aloud. मैं जोर से हंसा. Devils in the basket, I said, twisted it out of his hand. उसके हाथ से गिर गए. He let go of it and I swung the whole weight into the air. और मैंने पूरा का पूरा वेट हवा में. बट अ फूल ऑफ अ कैब मैन स्टैंडिंग, जो वो पब्लिक हाउस के बाहर खड़ा हुआ था, मेड उसने एकदम रश
करा बहुत, an extended hand hit me under the ear painfully. I let the basket down with a smash on the cabinet, और वो मेरे हाथ से गिर गया. And then with the shouts and the clatter of feet about me, people जो है वो लोग शोर करते हुए वहां शॉप से निकल के आते लगे, vehicles pulling up. I realized मैंने ऐसा क्या कर दिया. Cursing my folly, I backed against a shop window के पास गया and prepared to escape the confusion. I pushed the butcher boy को मैंने धक्का दिया, who luckily did not turn to see the nothingness that shoved him aside and dodged behind the cabman's four-wheeler. I hurried straight across the road and hardly seeing which way I went. मुझे नहीं पता, मैंने देखा नहीं था कि मैं किस तरफ गया. Plunged into the afternoon throng of Oxford Street. Suddenly एक bright idea दिमाग में आया मेरे. I ran around and got into the cab में जाकर मैं बैठ गया. And so shivering, scared and sniffing the first intimations of a cold. शिवर भी कर रहा था कि जैसे कोल्ड की वजह से. And with the bruises of a small of my back growing. I rode slowly along Oxford Street and मैं ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट की तरफ मैंने चलना शुरू किया and passed Tottenham Court Road. मेरा मूड बहुत डिफरेंट था from that in which I had sullied the fourth 10 minutes ago. ये invisibility indeed. One thought that possessed me was how was I get out of that scrape I was in. मैं उस वहां से कैसे निकलूं जिसमें मैं फंस गया हूँ. We crawled past muddies and there are tall women that hailed my cab and I sprang out just in time to escape her. I headed to Bloomsbury Square intending to go north past the museum and get into the White District. लेकिन एट द नॉर्थवर्ड कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर एक लिटिल व्हाइट डॉग था जो सोसाइटी ऑफिसेस के बाहर से भागता हुआ आया एंड मेड फॉर मी नोज डाउन. लाइक डॉग स्मेल कर सकते हैं. they keep he was trying to smell this there somebody standing here. They can even smell the ghost. उन्हें पता लग जाता है. तो आई नेवर रियलाइज, मैंने कभी ये चीजें फील नहीं की थी. बट नोज इज टू द माइंड ऑफ अ डॉग what the eyes of the mind of a seeing man. हम तो सिर्फ आंख से देख सकते हैं, डॉग स्मेल करके पहचान लेते हैं. So the brute began barking. उसने बात करना शुरू किया, leaping, showing clearly कि उसको मेरा एहसास हो गया, उसको पता चल गया that I am here. I crossed the Great Russell Street. मैंने क्रॉस किया, glancing over my shoulder and went some way ahead before I realized कि what I was running to, कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ. मैंने एक म्यूजिक सुनाई दिया. लुकिंग अलोंग द स्ट्रीट मैंने देखा बहुत सारे लोग जो है दे वर कमिंग आउट ऑफ रूसल स्क्वायर एंड बैनर ऑफ द सैल्वेशन आर्मी आगे उन्होंने लगा रखा. तो इस तरह का जो क्राउड था, आई कुड नॉट होप टू गो थ्रू. अब डिसाइडिंग ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, उसने कहा इस तरह का क्राउड अगर होता तो मैं तो कभी वहां से जाता नहीं, ना मैं निकल पाता. तो डिसाइडिंग ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट वो कहाँ भागा, वाइट स्टेप्स ऑफ अ हाउस फेसिंग द म्यूजियम रेलिंग्स की तरफ जो था. एंड वो वहां पर खड़ा हो गया जब तक क्राउड वहां से चला नहीं गया. हैप्पीली डॉग भी रुक गया बैंड की आवाज सुन के, हेजिटेटेड एंड टर्न्ड टेल. ऑन केम द बैंड. थर्ड 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 केम द ड्रम आए, फिर वाइब्रेटिंग ड्रम्स की साउंड आ गई जोर जोर से. एंड फॉर द मोमेंट आई डिड नॉट, मैंने नोटिस नहीं किया टू अर्जेंट्स दे स्टॉपिंग एट द रेलिंग्स बाय मी, कि मेरे पास ही आकर सी देम. सेड वन, एक ने बोला देखो. सी व्हाट, उसने कहा, दूसरे ने बोला क्या देखो. व्हाई, देम फुट मार्क्स देयर. अब फुट मार्क्स देखे, लाइक व्हाट यू मेक इन मड. जैसे मिट्टी में, मिट्टी से मतलब मिट्टी के पैर थे छपे हुए पेयर्स पर. आई लुक डाउन, मैंने नीचे देखा. तो यंगस्टर्स हैड स्टॉप्ड एंड वर गेपिंग एट द मडी फुट मार्क्स को वो देख रहे थे जो मेरे जब मैं चल रहा था वो पीछे छूटते चले गए. न्यूली वाइटन स्टेप्स पे, वो सीढ़ियां जो थी, स्टेयर्स थी, वो बिल्कुल नई नई पेंट हुई थी. तो देयर अ बेयरफुट मैन था कि वो कोई ऊपर गया है स्टेप्स पे, एक ने बोला. एंड ही एंट नेवर कम डाउन, और वो नीचे नहीं आया. एंड हिज फुट वाज ब्लीडिंग. अब थिक ऑफ द क्राउड जो है ऑलरेडी वहां से जा चुका था. लुक देयर सेड द यंगर ऑफ द डिटेक्टिव्स, वहां से बोला विद द शार्पनेस ऑफ सरप्राइज. तो उसकी आवाज में थोड़ा सा सरप्राइजिंग थी. एंड उसने पॉइंट किया मेरे फीट के टुवर्ड. I looked down and saw at once hint of their outlines sketched in splashes of mud. So for a moment, तो मैं एकदम अटक गया. I was like surprised and paralyzed. Why it's just like the ghost of a foot. उसने ऐसा नहीं लग रहा कि ये किसी भूत के पैर है. Claimed the elder, who hesitated to advance with outstretched hand. In another moment, he would have touched me. ऐसा लग रहा था कि अब वो मुझे पकड़ ही लेंगे, मुझे टच कर लेंगे. So I took a step. The boy started back with an exclamation. And with a rapid movement, I swung myself over into the porch of the next house में मैं जंप करके चला गया.
बट जो स्मॉलर बॉय था वो बहुत ही शार्प आइड था, इनफ कि वो उसने मूवमेंट को मेरे फॉलो कर लिया। वो चिल्लाने लगा, अब द फीट हैड गॉन ओवर द वॉल, की जो फीट है ये ऊपर वॉल की तरफ जा रहे हैं। दे रश्ड अराउंड एंड उन्होंने नए फुटमार्क्स मेरे देखे, फ्लैश इनटू बीइंग एंड द लोअर स्टेप एंड अपॉन द पेवमेंट। फिर देखे व्हाट्स अप, मैंने पूछा ये क्या हो रहा है, फीट लुक, फीट रनिंग, फीट चल रहे हैं। देयर वाज एन एडी ऑफ सरप्राइज एंड इंटेरोगेशन, अब सबके दिमाग में इतने सारे क्वेश्चन, सरप्राइज, ये क्या हो रहा है। तो अनदर मोमेंट में आई वाज रशिंग हेड अलोंग राउंड द सर्किट ऑफ रूसल स्क्वायर विद 6 or 7 एस्टोनिश पीपल मेरे फुटमार्क्स को फॉलो करके मेरे पीछे आए। माय बैक हैड नाउ बिकम वेरी स्टिफ हो चुका था एंड सॉर माय टॉन्सिल्स जो थे वो बहुत पेन कर रहे थे फ्रॉम द कैबमैन्स फिंगर्स एंड स्किन ऑफ माय नेक जो थी वो स्क्रैच हो गई थी बाय हिज नेल्स एंड आई वाज लेम फ्रॉम अ लिटिल कट ऑन माय। सो आई सॉ इन टाइम एक ब्लाइंड मैन जो था वो मेरी तरफ आ रहा था एंड फ्लेड लिम्पिंग और आई फियर्ड सबल इंट्यूशन से मुझे डर लग रहा था। Once or twice accidental collisions हो गए and I left people amazed with unaccountable curses ringing in their ears. Across the square, thin veil of slowly falling flakes of snow नीचे आ रहा था. So I had caught a cold. मुझे ठंड लग गया. I was catching a cold and मैं avoid नहीं कर पाया एक an occasional sneeze भी. जो छींक आ गई. And हर एक डॉग जो है जो मेरे रास्ते में आया विद इट्स पॉइंटिंग नोज की नोज बहुत शार्प होती है डॉग्स की, वो मुझे पहचान रहा था और वो क्यूरियसली स्निफिंग वाज अ टेरर टू मी। देन केम मेन एंड बॉयज भागते हुए आए शाउटिंग एज दे रैन, इट वाज अ फायर। तो वो डायरेक्शन जहाँ जहाँ मेरे पास सामान की जो थे मेरे पीछे पीछे कर रहे थे। फिर दे लुकिंग बैक एट द डाउन इन द स्ट्रीट, मैंने देखा बहुत सारे ब्लैक स्मोक स्ट्रीमिंग अबव द रूफ्स एंड टेलीफोन वायर्स। तो वो मेरे लॉजिंग जो थे इट वाज बर्निंग, माय क्लॉथ्स, माय apparatus, ऑल माय रिसोर्सेज, सब चीजें बर्न हो गई थी। आई हैड burnt my boats if ever I manned it. The place was blazing, an invisible man वहां पॉज हुआ and सोचा। Kemp glanced nervously out of the window. Yes, he said. Go on. Fun fact, invisibility has fascinated people for years. One famous example is Harry Houdini. एक मैजिशियन था, वो अपने इनक्रेडिबल एस्केप एक्ट के लिए जाना जाता था। While not invisible, Houdini ने मास्टर्ड करा था आर्ट ऑफ वैनिशिंग फ्रॉम लॉक्ड रूम्स में से वो गायब हो जाता था, की कला थी। एंड टाइट स्पेसेस मतलब जहां जहां ऐसी जगहों पे बंद कमरों में से ही यूज टू वैनिश। Vocabulary words: unaccustomed, unfamiliar, bold, a wooden or metal bar used to fasten the exaltation, great joy, jest, joke, well, take great pleasure, soda water, substance bottles with a device that could be more carbonated water, folly, stupidity, shoved, pushed forcefully, strong, crowd, sullied for, set out, scrape, trouble, Salvation Army, a Christian charitable organization, partly military structure of organization. Resonance, echo, yapping, staring, eddy, a circular movement, usually of water or air. Interrogation, questioning, uncountable, inexplicable. Engage in an assess, let us assess. Let's do the true and false. After leaving the house, the narrator felt anxious and nervous of great importance. The narrator felt relieved when he saw his lodging burning as it admitted evidence of. The narrator managed to avoid any collisions with people while escaping through Russell Square. False. The narrator's invisibility proved to be more of a burden than an advantage during the series of events. Through the fill in the blanks. The narrator twisted a basket out of a man's hands with finding amusement in the man's astonishment. Dash noticed the narrator's muddy footprints on the steps, realizing someone invisible had passed by. A boy with sharp eyes. The narrator injured his ear and back during the encounter with the cabman. The narrator's lodging, including his clothes and apparatus, caught fire and was destroyed. So I hope you all have understood this chapter. You can go through it again. Bye bye. Take care.